best. That is, meditation is effortless. Mind becomes fresh and alive. It gets deep rest, deeper than the sleep. And concentration then becomes spontaneous. Once we have a good meditation, the concentration हमारा अपने आप अच्छा हो जाता है. Yeah. Can you all hear me? Yeah, good. So meditation is an art of doing nothing. जब हम कुछ नहीं करने की क्षमता, विच इज वेरी डिफिकल्ट, माइंड इज ऑलवेज एंगेज्ड इन समथिंग, कुछ ना कुछ माइंड को करना है. और जब हम ये आर्ट सीख लेते हैं ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट इज रियली ब्यूटिफुल. कुछ समय के लिए वो 20 मिनट अच्छा अप्रयत्न किंचन, जिसकी हमने कल बात की थी कि मुझे थोड़ी देर कुछ नहीं चाहिए. आई डोंट वांट एनीथिंग. फॉर सम टाइम आई डोंट डू एनीथिंग, and for some time I am nothing, and then I'm just here to experience the vastness of the space within. With few minutes of meditation, what happens, हम अपनी उस स्पेस में, like that vastness, एक बड़े आकाश तत्व में आ जाते हैं, और हमारा उसके द्वारा हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छा हो जाता है, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं. एंड लाइक सुदर्शन क्रिया लीड्स टू इनर स्पेस. अगर हम कहते हैं हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो, और सुदर्शन क्रिया और सहज में क्या डिफरेंस है? सुदर्शन क्रिया हमें उस इनर स्पेस में ले जाती है, द स्पेस ऑफ थॉटलेसनेस, स्टिलनेस, जहाँ थॉट्स कम है, जहाँ एक स्टिलनेस है, जहाँ एक खालीपन है, एक अनुभव है अपने आप का. और आर्ट ऑफ मेडिटेशन उसमें गहराई में उतरने. जब हम सहज करते हैं तो हम उसकी गहराई में उतरते हैं. Isn't it so beautiful? So now, do you have any questions? And then I will talk about what are the things that aid in meditation, and what are the things that, take our mind away from meditation. So you have any question? I can unmute you also if you have any question. Otherwise, we'll move on. Yeah. Okay. So let us now move on to what helps us in better meditation. Yeah. तो हमें जो ध्यान के लिए क्या क्या चीजें सहायक हैं, मतलब कौन सी चीजें करने से हमारा ध्यान अच्छा होता है? ध्यान हमें करने से एक हम सात्विक स्टेट में पहुंचते हैं ना, सात्विकता हमारे में आती है, और जितना हम सात्विक होते हैं उतना भी हमारा ध्यान अच्छा होता है. तो हम क्या क्या चीजें करें जिससे हमारा ध्यान अच्छा हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने बॉडी को उस लेवल में लाना है कि वो कुछ समय स्थिर रह सके. तो उसके लिए क्या है, हमें बॉडी के थोड़ा ध्यान रखना है. तो थोड़ा योगा अभ्यास, स्ट्रेचेस करने हैं लिटिल बिट. और रेस्टलेसनेस जब बॉडी में बहुत होती है, मन में, तो भी ध्यान नहीं होता है. तो उसके लिए थोड़ा सा हम वार्म अप, थोड़ा सूर्य नमस्कार, थोड़ा अगर हम जॉगिंग, थोड़ा सा हम रनिंग, या जितना ज्यादा रेस्टलेसनेस है उस हिसाब से हम उतना, अगर हम एफर्ट लेते हैं, लाइक वी डू सम, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, वी कैन डू थिंग्स लाइक सम good Surya Namaskar, stretches, anything that brings out the too much of restlessness in the body and lets the body settle down. उसके लिए आसना तो फिर बहुत सहायक होते हैं. पहले जब हमने रेस्टलेसनेस हटाई थ्रू सम little vigorous activity, and then asanas further stretch the whole inner self, opens up the energy channels. Asana helps us to go deeper into ourselves, and then आसना brings us stability. एक एकाग्रता अगर हमें पानी है तो वो आसनों के द्वारा. जब आसन में हम स्थिर हो जाते हैं ना, कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम. जब आसन में हम स्थिर होते हैं तो हम ध्यान में और स्थिर होने की हमारे में वो एबिलिटी आती है, हम क्षमता आती है कि हम ध्यान में बैठ सके. सो दैट इज वन साइड. एंड देन what about then pranayam? How pranayam helps? Pranayam helps by, as we take in breathe in pranayams, our physical body is getting oxygen. It's getting oxygenated, which is very important. If you have low energy,
if you have really low oxygen level in the body, it's very difficult to, go deeper into meditation. And then especially Pran Shakti. Whenever we are doing pranayams, our Pran Shakti goes high. And as the Pran Shakti is high, we get more ability to meditate. We get the ability to go into samadhi even. पतंजलि महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब हम प्राणायाम हमें वो एबिलिटी देती है कि हम जो है हम धारणा में जाएं और धारणा के बाद हम समाधि में जा पाएं. So these are the things which we can do at when we are doing yoga, pranayam. Then how we maintain that state of body. First is that we also have to see our lifestyle. अगर हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा तामसिक चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा राजसिक चीज़ें हैं तो फिर अगेन देयर इज डिफिकल्टी. सो हाउ टू हैव सात्विक लाइफ. नाउ सात्विक लाइफ मीन्स दैट वी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लें जो हम हैप्पीनेस प्रोग्राम में कहते हैं, तो उन सब के द्वारा हम एनर्जी लेवल भी बढ़ाते हैं और उन सब के द्वारा हम अपने शरीर को सात्विक भी बना सकते हैं. तो जैसे कि अगर हमने राइट खाना खाया, व्हाट इज अ सात्विक फूड? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, eating healthy things which are freshly cooked. Even if you're having cooked food, whether it's rice, dal, roti, sabzi, whatever we are having, in the day-to-day Indian cuisine, even if you're having South Indian or North Indian or Gujarati food or Assamese food, but it should be freshly cooked. It should not be a stale food. According to Ayurveda, actually we should finish our food in 5 hours. So you can extend to 2-3 hours more, but don't eat stale food. That again brings down the Pran Shakti. And eat very, very minimal of tinned and packed food because they have no prana. So one is increasing the Pran Shakti in the food. Then second is that how we eat, with what mind we eat. We have, if we have to make a food sattvic, we have to pray, we have to pray to divine, to make this food pure. And that's why we have some chantings like Brahmarpanam and other things like Brahm. So we do some chants. We can even chant Gayatri mantra before eating, and that purifies, brings the right vibrations in the food. And whenever we pray, the food becomes prasad. That we all know in India, it becomes the God's, something that God gives you. तो एक तो वो हो जाता है कि हम खाना अच्छे मन से खाएं, अच्छे संस्कारों से खाएं, and then we are focusing on food. Most of the time, how we are eating, we are doing 10 things and we are eating, and there is no focus at all in the food. So again, the food doesn't get because if you're into rajas, you're watching a movie and the movie has a lot of, action, terror and all that. How can the food be sattvic? Your mind that time is not sattvic, and of course the vibrations of that music is not sattvic. So to make the food sattvic, eat at the right time, and with the right mind, and also with right prayers, and then really be interested in the food. Actually Brahmarpanam means we are giving the food to the offering the food to God, and the food is also God. मतलब वो अन्न ही ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानम, मतलब अन्न ही ब्रह्म है और हम ब्रह्म को ही समर्पण कर रहे हैं. तो we have to eat with that mind. That is again one thing about that food. that food को अच्छे मन से खाना है, सही टाइम पे खाना है, सही क्वांटिटी में खाना है, एंड सात्विक खाना खाना है. एंड देन कमिंग टू स्लीप, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स पे हो, या आप रात को 12 बजे तक रोज फेसबुक कर रहे हैं, ऑन ऑल सोशल मीडियाज यू आर देयर, whether it's Instagram or Snapchat or whatever. If you are that, and then आपकी जब नींद पूरी नहीं हो रही है, how can you have a good meditation? क्योंकि जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो उस समय सिर्फ नींद आएगी. So you will go to sleep. So it's important that you have adequate sleep of 7 to 8 hours or 6 to 8 hours, and then you sit for meditation. So that is again sleep, and the quality of sleep and all defines. आपका अच्छा meditation होगा तो नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, नींद की क्वालिटी अच्छी होगी तो मेडिटेशन भी अच्छा होगा. तो it's like all these things are helping each other. They are interdependent. That's why we need to have a balanced life. We cannot say कि हम तो ध्यान करते हैं और हम तुरीयावस्था में आ गए, अब तो मुझे 1 घंटा सोना है. That happens, of course, that happens with the one, somebody like Gurudev who can sleep only 1 hour a day and still be fresh and everything. तो ऐसे तो हैं,
हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनको शायद सोने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब तक हमारा वो स्टेट नहीं आता, जब तक टाइम से सोना है और रात को सोना है, क्योंकि दैट इज द टाइम द होल कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक एनर्जी इज लाइक दैट विच लीड्स यू टू स्लीप. तो जितना हो सके, अनलेस यू हैव अ scheduled night shift or something, you're studying abroad and you have to study here, yeah, you're in India in lockdown and you have to study, that's fine. But otherwise, we all have to sleep on time, and between 10 to 11, we should always be in the bed. सो नींद एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिससे हमारा ध्यान अच्छा लगता है. एंड देन ब्रीदिंग, एज आई सेड, प्राणायाम, आई ऑलरेडी told you in detail why the pranayam increases the life force energy, pran shakti, which helps us to go deeper into meditation. And also I'm going to answer the questions. I am seeing some people have been asking. I'll take the questions. तो प्राणायाम, एंड देन प्राणायाम ऑफ कोर्स ऑक्सीजनेट्स द बॉडी. अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे होगा तो लो एनर्जी होगी, लो प्राण शक्ति होगी. ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो नींद ज्यादा आएगी. तो we have to have adequate oxygen level and high prana. And then the last one comes your attitude of mind. If the mind is full of negative thoughts, negative means everything you see, wherever you focus, like something negative you see negative in people, you see negative in situations, you see negative in, when in the problems, you make the problems too big. हमारे जीवन में, सबके जीवन में challenges हैं. We agree to that. सबके जीवन में कुछ problems है, but where the mind is, you have 80% good happening in your life, but your mind is always in that 20% challenges, problems, worries. And then you own thinking about those 20%, what you say, मेरी लाइफ तो बहुत दुख भरी है, आई एम ऑलवेज हैविंग प्रॉब्लम, मेरे को तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं. वी आर नॉट सीइंग दैट 80% which is so nice. We are so blessed to have that 80%. And what we are doing, we are focusing on that 20%. So हमें, अगर हम ध्यान अच्छा चाहते हैं तो हमारे मन के विचारों का बहुत प्रभाव होता है. मन के विचार कैसे होने चाहिए? अब व्हाट इज सात्विक विचार? सात्विक विचार ऐसे विचार होते हैं जिनके द्वारा हमें शांति मिले. अगर हम किसी के लिए कोई भी द्वेष रख रहे हैं, राग रख रहे हैं, इफ यू आर हैविंग जेलसीज, ग्रीड, इफ यू आर हैविंग दैट नेगेटिव कंपटीशन विद समबडी, तब तो जब नींद ही अच्छे से नहीं आती है तो ध्यान कैसे अच्छे से लगेगा? अगर हमारे अंदर नेगेटिव, सी, इफ यू आर हैविंग एंगर, इफ यू आर हैविंग ग्रीड, जेलसीज, इफ यू आर हैविंग फ्रस्ट्रेशन, इफ यू आर हैविंग दैट थिंग ऑफ cutthroat competition in mind, if you're only trying to prove others wrong, if you're only trying to get ahead of others, इतनी रेस्टलेसनेस माइंड में हो जाएगी, कितनी रेस्टलेसनेस. उस रेस्टलेसनेस में, उस अशांति में, जब हमें नींद भी नहीं आएगी, उस समय ध्यान कैसे लग सकता है? तो ध्यान में जाने के लिए अपने विचारों को देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स आर कमिंग इन माय माइंड. एंड विद सी, आप ध्यान करेंगे तो आपके विचार में शुद्धता आएगी, और विचार में शुद्धता आएगी तो ध्यान भी और गहरा होगा. सो हाउ दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड. बट देन वी हैव टू गोइंग टू राइट इंटेंशन. दैट इज वन थिंग दैट वी कैन डू. जब हम एक बार मन में एक सोच लेते हैं कि हाँ, मुझे अपने विचारों में शुद्धता लानी है, तो गुरुजी क्या कहते हैं, तुम एक स्टेप लेते हो ना, तो ईश्वर तुम्हारी तरफ 10 स्टेप लेते हैं. आपने जब एक इंटेंशन रखा, ओ आई हैव टू मेक माई थॉट्स प्योर, आई हैव टू मेक माई फीलिंग्स प्योर, नेचर विल हेल्प यू इन डूइंग दैट. बट अनलेस यू टेक दैट, आप जब तक कि वो जो अपने मन में वो इंटेंशन ही नहीं रखते, तो हाउ कैन नेचर हेल्प यू, हाउ कैन डिवाइन हेल्प यू? Divine is going to help you when you have that intention. Oh, I am going to, have the purest of the thoughts. I'm going to make my, feelings, emotions pure, and then it will start happening. तो अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स रखना, ऑप्टिमिज्म रखना, अपने मन में किसी के लिए कुछ खराब फीलिंग्स ही नहीं आने देना. और तब अगर हम ऐसा स्टेट ऑफ माइंड रखेंगे तो ध्यान तो आराम से लग जाएगा. और बिना ध्यान, मतलब जब ध्यान की नहीं भी है, जब ध्यान में बैठे हैं तब तो अच्छा ही है, और जब ध्यान में नहीं है तो भी हम उस शांत स्थिति में रहेंगे, उस ब्लिसफुल स्टेट में रहेंगे. Now let me take some questions and then I'll tell you what are the things that don't let you
go into meditation. I've just now discussed what are the things which are helpful in meditation, like right food, right sleep, right breathing, then right of course breathing में मैंने ये नहीं बताया कि अगर आप कुछ प्राणायाम है जो बहुत helpful होते हैं breathing में, like नाड़ी शोधन, भ्रामरी, they are very helpful. And even if it's very hot, Seetli, Shitkari are also very good. And then I'll talk about things which keep you away from meditation. Okay, you want to know the follow up. Okay, so some Sehat Samadhi we take follow up on last Sunday of the month, and my take follow up between say 8:30 to 10:30, or on Sunday morning. Sometimes I have programs others, so I take a little later or sooner. Okay, then the second, what is out of the body experience? Okay, out of the body experience is nothing but expansion of the body, expansion of yourself, your consciousness, not the body actually, but the expansion. So when we say out of the body, see, inside body experience we are having all the time, that we are in the body. But what Gurudev says, that your body is in your mind, body is in your consciousness. Your consciousness is so wide. If you actually expand, you're one with the entire universe, entire creation. तो जितना हमारे में expansion होगा उतना हम light होंगे, एंड जितना एक्सपेंशन होगा उतना हम ध्यान अच्छे से कर पाएंगे. तो गुरुदेव आपको ध्यान से पहले कितनी तरफ आपका ध्यान ले जाते हैं? यू नो, ही विल टेक योर अटेंशन टू द टॉप ऑफ द सीलिंग, you know, base of the spine. He'll take your right side, left side. Sometimes he takes in aura meditation. Gurudev takes your attention to the entire universe. What is that expansion? Because you have, once, you know what Vivekanand ji said? He said expansion is life and contraction is death. What does that mean? The contraction is, you know, contraction is that means जब हम बहुत सिकुड़ जाते हैं, it's like dying. और वो कब होता है? जब प्राण शक्ति एकदम लोएस्ट होने लगती है. लोएस्ट जितनी प्राण शक्ति नीचे जाएगी उतना कॉन्ट्रैक्शन होगा और उतना वी फील मिजरेबल, बिकॉज आवर स्टेट, आवर नेचुरल स्टेट इज एक्सपैंडेड. इन आवर नेचुरल स्टेट हमारी जो हमारा विस्तार बहुत बड़ा है. मतलब if we actually, like Gurudev thinks of the whole world as his own self, उनकी अपनी consciousness लगती है उनको. तो हम natural state में हमारा बहुत बहुत ज़्यादा विस्तार है, और जब हम उसको छोटे में, जब जो छोटा हो जाता है तो हम उसको bear नहीं कर पाते हैं, और जब और हमारा प्राण शक्ति लो होने लगता है तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं. उससे भी लो होता है तो हम suicidal thoughts आते हैं. हम now these societal thoughts of what, you know what happens, आप इतना contraction feel कर रहे हो कि it becomes unbearable for the soul. You know, it is like you know, it is like wearing a very tight jacket and you're unable to, you know, feel that. तो आपकी जो अपनी आत्मा, soul को इतना ज़्यादा suffocating हो जाता है that it just wants to leave the body. So we need to, through pran shakti, through all these things, we can keep the mind into a, you know, into a very positive state, positive attitude, with the right thing, with right food, right sleep, right pran shakti. All these help. They are all a composite, क्योंकि हम एक चीज करते हैं वो दूसरी चीज अपने आप आने लगती है. जब हम अच्छे से सोते हैं, हम डिसिप्लिन में रहते हैं, अच्छे से खाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग द लिटिल इम्बैलेंस. जब एक लाइफ में ऐसी हमारी यू नो, हम अपने एक डिसिप्लिन बना लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें अपने आप पता चलने लगता है where I am going wrong. I have not slept enough, that's why I'm feeling like this. I have not eaten good food, that's why. So it is all, the more you meditate, the more awareness comes about where are you going wrong. And the more awareness you have, the more you realize the importance of meditation. Isn't it beautiful? So meditation की importance भी हमें तभी पता चलती है जब हम meditate करने लगते हैं, और जितना meditate करते हैं उतना हमें उसका effect अनुभव होता है. So then now we can talk about, you know, what are the things that keep us away from meditation. Yesterday we talked about so many benefits of meditation. No? So there is no sphere of life where meditation doesn't help you. Physically, it's amazing. Your body gets healed. Any kind of illness goes away.
is reduced, at least even if you start late, आपकी हर बीमारी कम होने लगेगी, because प्राण शक्ति बढ़ते ही बॉडी को एबिलिटी मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, and the body, the healing starts happening. Mentally we know that meditation makes the mind so peaceful, so relaxed. Emotionally it is rejuvenation. जो emotional thoughts हमें इतना feeling low कराते हैं, वो भी suddenly change होता है. After any deep meditation we feel, oh, it's like absolutely everything is over, life is so now fresh again. Thank you, Jasmine. I hope it's like, it's beautiful, and I know actually that I am able to express what I'm trying to express, because talking about meditation is so beautiful, one thing, and it is endless. I can talk about a whole day. And the third thing is very subtle. It is easy, but it's also very difficult to make, because it's only experiential. There is no way you can talk 100% about meditation. It is so experiential. So do you want to know what are the things that keep you away from meditation? Okay, one, the biggest thing that keep you away from meditation is you telling that I don't have time. आप जब ये सोच लेते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर बस कभी भी टाइम नहीं मिलेगा. आप ये सोचो कि आपके पास 24 आवर्स हैं और उसमें हम सिर्फ 40 मिनट अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं. हम अपने को वो बेस्ट चीज नहीं दे रहे हैं जिससे ऊपर कुछ है ही नहीं. If you were given the whole, all the treasures and all the, the most expensive things, even if you were made the king of the world and you were asked not to meditate, don't exchange with that, because the inner complete happiness can only come with meditation. Because even if we have everything, there's some vacuum inside, because we are not giving food to the soul. तो वो है, हमें बहुत जरूरी कि हमें ये डिसाइड कर लेना, हमें मेडिटेट तो करना ही है. गुरुदेव क्या कहते हैं पता है आपको? गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम चाहे खाना एक दिन मत खाओ, एक दिन मत सो, बट मेडिटेट जरूर करो. यू कैन स्किप मील्स. If you think I have less time, okay, skip meal but have meditation, because that will give you more energy, more peace of mind than food. तो एक तो ये डिसाइड कर लेना है कि हमें करना है. कम वॉट में आई हैव टू डू. जब आपके पास बहुत ज्यादा काम होता है, सपोज यू आर सो बिजी, तो भी खाना खाने का तो टाइम मिल ही जाता है ना हमें. हम एक दिन नहीं खाएंगे, दूसरे दिन तो खाएंगे ही. वेदर देयर इज अ मैरिज इन द हाउस, वेदर इज लॉट ऑफ वर्क इन द ऑफिस, वॉट एवर, वी डोंट स्टॉप ईटिंग, वी ईट. चाहे हम खड़े होके कहीं पे भी जल्दी जल्दी भी खा रहे हैं, फास्ट फूड भी खा रहे हैं, बट वी ईट. सिमिलरली वी नीड टू never skip meditation, which is a food for the soul. That's one. Second thing is the intention. Now intention is there. Second, thinking, not that having doubt about yourself. We doubt in three things: about the technique, about ourselves, and about गुरु और द मास्टर. तो ये तीनों चीज में जब डाउट किसी में भी होता है, तो फिर ध्यान नहीं लगता है. तो हमें अपने ऊपर डाउट करना ही नहीं है, और मेरे से तो मेडिटेशन होगा नहीं. आपको कैसे पता आपके बारे में? यू डोंट नो अबाउट यू. यू आर इन्फिनिट. आपकी वो जो सेल्फ, इन्फिनिट सेल्फ है, दैट कैन ईजिली मेडिटेट. एंड हमें ये सोचना ही नहीं है कभी कि I don't have the ability to meditate. Okay, that is one. And don't have the doubt in the technique. कम से कम उसको 1 साल करने के बाद, 1-2 साल करने के बाद भी नहीं हो, तो भी आप उसको डिस्कस करिए. You discuss with the people who have been doing meditation, and you talk it out, and then you decide, whether you want to change the technique of meditation, not drop meditation, but you can change the technique. Something else may work for you. And then don't doubt on the master, because master को क्या मिलना है? आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो master is not going to gain, मतलब lose anything, but you will lose a lot. Master is there only to give. तो एक तो doubt first is that we have to have the intention that we are, and that firm determination that I'm going to meditate. It's best for my body, my mind, my soul. Second is that, not having any doubt. And the third thing is that just being little flexible in the schedule. जैसे हमने सुबह अगर हमारा कुछ हो गया, suppose tomorrow I'm starting Sehat Samadhi program. Now 6 to 8 is my time for my sadhana, but I'll be in the program.
So that day I have to get up earlier in the morning to meditate, or I have to do it after my class. So I have to be flexible that, okay, 6 to 8 I'll do, I'll have some light food, like light fruit or juice, and then I have to do my sadhana. But it cannot be I can say मेरा class है मैं साधना नहीं करूँगी. So flexibility बहुत important है. Be flexible कि whenever possible, even if I have a tough schedule, even if I'm traveling, I will find out time. And once you're flexible, you will find out time. And कुछ नहीं तो आपको lunch से पहले, okay, I could not meditate in the morning, okay, before the lunch I'm going to sit for 20 minutes, 10 minutes of some pranayam something, and 20 minutes meditation. Okay, I could not do before dinner, I am not going to have food before, I am not going to have food till the time I meditate. So this kind of thing, you just have to be flexible also. Now there's certain things with Patanjali ji. Rishi Patanjali has also given, like, the 9 obstacles to sadhana, which that day also I think I shared with you one day. So let us talk about them today as well. What were the thing? If some of you were there, you can talk about them. So we had those 9 obstacles. One was Vyadhi. Vyadhi is what? Some illness in the body. So what do we do for that? We keep our body healthy through whatever. First is, of course, the prevention is all yoga, pranayama, meditation, some exercises and all that. Eating the right food, right supplements. And what are the supplements in Ayurveda, which are like turmeric, the spices like, tulsi, neem, and those kind, ashwagandha and all. So take the right food, right supplements. And then the second is, of course, once you already have illness, you have to go for some treatment. Then sthana is some illness in the mind. तो कभी mind की जितनी ज़्यादा illness होगी, उतनी meditation में problem आएगी. But if you have something which is like very small or something, that meditation itself will cure. But if you have some bigger, mental disease, somebody in your family, then of course they might find it difficult to meditate. And if that can be cured, meditation will happen. Then doubt, I've already discussed with you. We have 3 types of doubt. Then pramada also keeps us away from meditation. What is pramada? Pramada is like, doing something, knowing that this is right but not doing. आपको पता है कि रोज ध्यान करना है लेकिन नहीं कर रहे हैं. That is pramada. और हमको पता है कि मतलब कुछ चीजें हम कर रहे हैं, हमको पता है कि नहीं करना है. हमको पता है कि हमें जंक फूड नहीं खाना है बट खा रहे हैं. हमको पता है रात को टाइम से सोना है बट 2 बजे सो रहे हैं. Both the things, when we do something which we know is wrong, that is also pramada. When we do something which we know, we don't do something which we know is right, that is also pramada. And then we have आलस्य. आलस्य तो सबको पता है. सुबह अलार्म बजता है and we want to sleep 5 minutes more. Okay, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, वो पूरा चला गया, वो मॉर्निंग ही चली गई. सो दैट इज समथिंग. आलस्य भी हमें पता है कि आज करना है. ओके, आज तो सिर्फ ठीक है, आज हम सूर्य नमस्कार नहीं करते, आज सिर्फ पद्म साधना कर लेते हैं. पद्म साधना पे आया, आज पद्म साधना भी नहीं करते, आज सिर्फ 3 स्टेज भस्त्रिका क्रिया कर लेते हैं. That, okay, let me just do kriya today. Today's I slept very late, so I could just do kriya. This is all what? Alasya. So we should not get, the more discipline you have, जितना आपके में एक डिटर्मिनेशन होगा, आपके में संयम होगा कि हाँ मुझे ये करना है, और आप जब करने लगोगे उतना आपको लाइफ में और एंजॉय करने का टाइम मिलेगा. दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. The more disciplined you are, the more you have time to have a beautiful life. जब आप डिसिप्लिन नहीं होते हो, आप अपने शरीर को थका देते हो, मन को थका देते हो, इमोशंस आर ऑल topsy turvy, your mind is all into chaos, how will you enjoy life? But when you are in discipline, your body is healthy to enjoy, your mind is peaceful to enjoy, your emotions are absolutely all right to enjoy the relationships, to have good time with your children, your family, your friends. So that's why it is very important that you have a discipline in life. Then avirati is being having obsession. तो कोई भी चीज का जब हमें obsession हो या खराब आदतें हैं, हमें कोई भी चीज, जैसे if we are into drinking, smoking, we are into like any bad habits, too much of obsession आजकल क्या है?
latest is WhatsApp, Netflix, Facebook. But it's okay. Like some people like me who work on WhatsApp, मेरा तो सारा art of living का काम WhatsApp, Facebook, but I am only that much time. I hardly spend any other time on like any, I hardly watch any movies, maybe once or twice a year. No Netflix ever. So the thing is कि you have to decide how you're using the social media. Social media को आप अपने gain के लिए, which is bringing something, bringing some productivity in your life, it's good. कोई आपके लाइफ में कुछ सकारात्मकता ला रही है, कुछ आपकी लाइफ में ऐड कर रही है सोशल मीडिया, इट्स गुड. बट इट्स जस्ट ड्रेनिंग योर एनर्जी, इट इज लाइक वेस्टिंग टाइम. सो हमें देखना है कि कोई भी अविरति में हम ना उलझे, ऑब्सेशन कोई भी ना हो, बैलेंस में. We had done that if Bhranti Darshan. Hallucination also keep us away from साधना, मेडिटेशन. हम कहते हैं मुझे तो क्यों ये जरूरत नहीं है, मेरा तो माइंड हमेशा पीसफुल रहता है. So that is again a hallucination. मेरे को तो like even I just like I do 5 minutes of meditation, it's enough for me. So those kind of hallucinations we keep in mind. And we start dreaming things. Okay, for me right now though I have lot of work, I have lot of my career is a priority, I don't need to meditate now, there's no time. Like I always quote this, Gandhi ji said that जब उन्होंने कहा कि जब मैं नॉर्मल में 1 घंटा ध्यान करता हूँ, लेकिन जब मैं बहुत बिजी रहता हूँ तो मैं 2 घंटा ध्यान करता हूँ. और गुरुदेव भी हमेशा ऐसे कहते, गुरुदेव कहते तुम जितना बिजी हो उतना ही तुम्हें ध्यान करने की और जरूरत है, बहुत ज्यादा चाहिए तुम्हें ध्यान उतना. यस. देन अलप्त भूमिकत्वा. अलप्त भूमिकत्वा क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है मेडिटेशन से, हमें लगता है कुछ अचीव भी नहीं हो रहा, हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं. स्टिल लगे रहो, ऐसा नहीं है आपको लग रहा होगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है लेकिन बहुत कुछ बदल रहा होता है हमारे शरीर में. ज्यादा हमारा शरीर पहले से हेल्दी हो रहा होता है, माइंड ज्यादा कामर होता है, मोर देयर इज मोर इंटेलिजेंस इन द माइंड, more clarity in the mind. We don't realize but it is happening. And अगर आपको खाने में आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप खाना तो नहीं छोड़ देते. आपको अगर आपको लग रहा है मेरी बॉडी में some problems are coming, तो you don't stop eating. In fact you should reduce eating, but you don't do that. It's similarly, अगर आपको कभी लगे भी कि ध्यान से इतना अचीव नहीं हो रहा है, don't stop meditating. Just see your lifestyle कि मैं सही खाना खा रहा हूँ, सही, am I sleeping right, I'm eating right way, I'm have following the discipline, मैं लाइफ के सिंपल रूल्स फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं. तो अगर आप उन सब पे काम करेंगे तो अपने आप से ध्यान लगने लगेगा. एंड दैट सिंपल फेथ, यस I can meditate, I am meditating. एक सिंपल फेथ, इस फेथ को कभी नहीं छोड़ना है. ये फेथ जो छोड़ देते हैं फिर they lose the track, they stop meditating. And then anavasti tattva. What is anavasti tattva? Is that instability कि भाई हमने 4 दिन खूब हमने साधना की, फिर 4 दिन छोड़ दी. 4 दिन हमें लगा कि यार लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन होनी चाहिए, सब डिसिप्लिन, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से अपना काम करना, सात्विक खाना खाना, और उसके बाद फिर 4 दिन बाद फिर 10 days all gone. So that is also keeps you away from deep meditation. एक निरंतर अभ्यास, मतलब it has to be for a long time, you have to be continuously doing that, then it is sadhana. और साधना का टाइम कम ज्यादा हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने कभी सुबह का दोपहर कर दिया, शाम कर दिया, but never leave it. As much as possible, do it all 30 days of your month, or maybe you can skip 1 or 2 days, but 28 days is a must, and you can do it when you want. So now I think I have spoken enough. You can ask questions. I'm unmuting. So tomorrow I'm starting Sehaj Samadhi, and anybody who has not done, अब सहज समाधि में क्या होता है, हम एक मंत्र देते हैं जिससे ध्यान अपने आप होने लगता है. हम एक उस गहराई में बहुत इजीली, सहज माने बहुत इजी से ध्यान हो जाता है. जैसे एक बीज मंत्र मिलता है, और एक जैसे हम बीज को जब मिट्टी में छिपा के रखते हैं तो उसको नरिशमेंट मिलता है, उस छिपे हुए उस सीक्रेट
जगह वो ग्रो करने लगता है, उसमें नीचे रूट्स आती हैं, ऊपर शूट्स आती हैं, एंड द होल ट्री ब्लॉसम्स। एक छोटा से बीज से एक 90 फीट का पेड़ भी हो जाता है। No, we have seen huge trees like neem, like mango, and even the giant red sequoia trees, which are the tallest trees in the world. So वो भी एक छोटे बीज से ही तो निकलते हैं। तो एक छोटा बीज हमें, it can blossom to any height. Similarly, वो छोटा सा बीज मंत्र हमें रियली बहुत बहुत लाइफ में पूरा खिला देता है, in every sphere, whether it's physical, mental, emotional, spiritual. Yeah, what's the question? So any other thing you want to ask? Link to register. Okay, Vidya ji. So I'll give you the link. You can write your number. We'll send you the link, or you want to have the link here. I can also type. Varuna, can you type the link? Yes. So any questions? Otherwise, we will sing a bhajan and then end today. No questions? So all of you who have not yet done Sehaj, you must do it. I highly recommend it. And once you have done, you will be very grateful to Gurudev, to Divine. Yeah, so I'll send you immediately for tomorrow. Yeah, so my daughter Pari has also written type the link. Yeah, so let us sing. We'll sing our old bhajan, which I love very much. Hari Narayan, Hari Narayan, Hari Narayan, Hari Narayan, Hari Narayan, 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 Hari Narayan, Narayan, Narayan. तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण, 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 सब में नारायण, नारायण, नारायण. हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, नारायण, नारायण. सूर्य नारायण, चंद्र नारायण, सूर्य नारायण, चंद्र नारायण, तारो नारायण, 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 तारो नारायण, नारायण, नारायण. हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, 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 हरि नारायण, नारायण, नारायण. ब्रह्मा नारायण, विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण, विष्णु नारायण, शिवजी नारायण, 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 शिवजी नारायण, नारायण, नारायण. हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, 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 हरि नारायण, नारायण, नारायण. माधव नारायण, केशव नारायण, माधव नारायण, केशव नारायण, कृष्ण नारायण, 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 कृष्ण नारायण, नारायण, नारायण. हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, 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 हरि नारायण, नारायण, नारायण. राधा नारायण, सीता नारायण, राधा नारायण,
सीता नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण नारायण नारायण. So thank you for joining today, and if you have any question you can ask. Otherwise we'll meet again maybe tomorrow, and I'll just put up on the group. And if anybody is not there in any of the groups where you get this information, you can leave your numbers. Otherwise, since you have got the information, you must be in one of the groups. Okay, so Uma ji, मैं आपको सहज follow-up का बता दूंगी, and then okay, you can repeat Sehaj Samadhi, but the only thing is that right now there's limitation, you have to pay for it. We are not allowing the repeaters right now, you know. So if you are ready to pay, then you can join. Otherwise, you can come for follow-up. Yeah, Vidya ji, yeah, I'll send you the link. So सबको मेरा एक बार फिर से pranam and my best wishes. Just stay blessed, stay happy, keep meditating, especially with Gurudev's meditations on YouTube. Have a beautiful life, and let's keep meeting again and again, and let's meet in knowledge and satsang, for knowledge and satsang, in knowledge and satsang, and of course sadhana. Don't miss your sadhana. That's my one thing that I'll keep pushing everyone in towards it. Don't miss sadhana, and just keep listening to Gurudev's knowledge or reading some knowledge. But with that, I think I'll end today's session. Jai Gurudev, everyone. Bye-bye. Thank you, Jasmine. Thank you for joining. So nice of you to join. Yeah. Thank you, Sanya, Madhuji, Gopalji. Hi, Sulu. Yeah, Teji and Rajivji. Chit Patnaik ji, and also Yashima ji, I hope you're good. Maybe we'll meet tomorrow. Vidya ji, Ramdev ji. Okay, bye. Jai Gurudev. Bye-bye. It is advised to start the day with Sudarshan Kriya. It is advised. Anything in the morning, Brahma Muhurat is good only. Whatever you do, that is a time meant for sadhana. Why? Because the vibrations, the cosmic rhythms are like that. The whole cosmos is at its maximum purity. Yeah. So एक तो वो है कि हमें वो पूरी cosmic जो energy है उस समय की वो हमें help करती है. But then it should never become a hindrance for you not to meditate. अगर उस समय नहीं उठ सकते, any time of the day, बस सोने के 1 घंटा पहले अपना साधना, हमेशा अपनी साधना अपनी पूर्ण कर दीजिए सोने के पहले. नहीं तो क्या होगा, अगर आप सोने के जस्ट पहले करेंगे तो प्राण शक्ति इतनी हाई हो जाएगी कि शायद नींद नहीं आए. So do we get to practice after Sehaj? Can you give me your number, contact number? Yeah, you all can take my number. It's 99541 00000. Yes, this is my number, and you all can join. आप लोग मेरे ग्रुप्स में भी I'll add you. If anybody is not in any of the group, I'll add you. Especially the fitness yoga में मैं सबसे ज़्यादा messages डालती हूँ. Gopal ji, thank you always. You are so regular. ज्ञान के पद पे हमारे साथ जो भी चल रहे हैं वो हमें सहायक होते हैं. So we all are walking on the path together. So we are helpful for each other. Thank you, Vidya ji, then.
Yeah, you